वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां फलयज शीतलां सस्यश्यामलां शारदं वन्दे मातरं शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित ध्रुवदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुगलाम्बरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्. I feel privileged to extend a warm welcome to all of you present here for the Independence Day celebration. First and foremost, we would like to seek the blessings and spiritual presence of our wonderful founder, Padma Shri awardee, Dr. Mrs. YG. In her memory, here is a poem. You are the beacon of light and hope. You did break the ground with your pearls of wisdom. Your courage, character, and charisma did bring the winds of change when you first ventured to enlighten a few, ended up enlightening thousands and more. A rebel you were against the labyrinth of ignorance, clutter, and confusion. You rose up to bear the torch of knowledge, leading the path to many a millions. You have departed to light up the darkest skies, left us with a soul that prospers and breathes, with the brilliance of true knowledge. The warmth of your smile, still shining bright in our hearts, is the light that guides us into the future. I would like to extend a hearty welcome to our principal, Mrs. N. Mahalakshmi. I would also like to welcome our beloved teachers and the students. And a big thank you to all of you for turning up despite such tough times. Welcome one and all. I now invite the school choir to sing Tamil Taiwai. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கீழொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிது தெக்கரமும் அதிசிறந்த திராவிடர்கள் திருநாளும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரிதகரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Flag salute. Order. அரை தாழ்ந்து பணிந்து புகழிடவாய் தாயின் மணி கொடுப்பாய் உச்சி வளர்ந்ததோ தந்தம் அதன் உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரம் என்று பாடிடல் ஊதி திராளும் சிவன் பட்டுளி வீசி பறந்தது பாடி தாய் மணி கொடுப்பாய் நின்ற சாமி
எங்கும் காணம் வீரர் பெருந்திரக்கூட்டம் நங்கள் புரிய அகீர தங்கள் நல்லுயிரே கொடியினை காப்பத்தாய் மணி கொடுப்பாரி அலை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்கிறவாரி தாய் மணி கொடுப்பாரி. Pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall respect my parents, teachers and all elders and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity lies my happiness. Jai Hind. The idea of independence was spread to the masses through powerful speeches years ago. Here we have our students to show us the power of speeches. First up, we have Hrishikesh. Shri Gurubhyo Namaha. Independence Day. India got freedom from the British rule in 19. Thank you, Hrishikesh. Sanskrit, one of the oldest languages, has been proven to help in speech therapy. It increases concentration and also helps one learn maths and science better. Next up, we have Ashwin to give a speech in Sanskrit. श्री गुरुभ्यो नमः. मम नाम अश्विन कुमार अस्ति. अहम् अष्टमकक्षायां पठामि. भारतदेशे पूर्वं परदिनः आसीत्. 47 उत्तरः सर्वे तमे वर्षे स्वतन्त्रम् अभवत् आगस्ट् मासस्य 15/19. अतः एव अस्मिन् दिने राष्ट्रीय उत्सवरूपेण स्वतन्त्रदिवसे उत्सवम् आचरन्तः वर्तामहे. स्वतन्त्रप्राप्त्यर्थं महात्मा गान्धी, लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक, भगत् सिंह एते अन्ये च स्वप्राणान् अपि निर्लक्ष्य महान्तं प्रार्थम्य कुर्वन्. तदर्थं तेषां सर्वेषां कृत्वा तस्य सर्वेभ्यः कृतज्ञतां पूर्वं धन्यवादं समर्पयामि. अस्मिन् शुभावसरे सर्वे एवमपि प्रतिज्ञां कुर्मः. प्लीस् आल् आफ् यू टेक् ओत्. भारतस्य सर्वविधविकस्य प्रयत्नशीलाः भविष्यामः. अस्य च स्वतन्त्रता प्राणपणेन रक्षिष्यामः. धन्यवादः. Songs are one of the most accessible forms of patriotism. They can be sung by anyone, anywhere, and require no equipment except your mouth and a heart full of love for your country. Here is Shrija to entertain our hearts and ears. वतन मेरे वतन, ये वतन मेरे वतन, ये वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ये वतन वतन मेरे आबाद रहे तू. मैं जहार हूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहार हूँ जहाँ में याद रहे तू. ए वतन मेरे वतन, है वतन
मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की याद आने नहीं दूर, तुझ पे कोई गम की याद आने नहीं दूर। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। आ, 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 तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल पहचान तुझी से। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। थैंक यू। Thank you, Shrija. Hindi is one of India's official languages and is mostly spoken in the northern half of the country. It is also spoken in Mauritius, Fiji, Guyana, Suriname, Trinidad and Tobago, and Nepal. We have Shaurya Sinha to give a speech in Hindi. श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम शौर्य सिन्हा है। मैं कक्षा 6 का एक छात्र हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त कर मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। ये हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है। आज से ठीक 74 वर्ष पूर्व हमें आज़ादी मिली थी। हमारे आज़ादी के संघर्ष की गाथा बहुत बड़ी है, जिसका वर्णन एक दिन में नहीं किया जा सकता है। हर भारतीय के लिए स्वतंत्रता दिवस बहुत बड़ा महत्व रखता है। आज से 74 वर्ष पूर्व हम पर अंग्रेज़ों का शासन था। वे व्यापार के बहाने भारत आए और धीरे धीरे सब कुछ अपने अधीन कर लिया और हमें अपना गुलाम बना लिया। फिर कई आंदोलन और लड़ाई लड़ने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली। हमारे देश के वीर योद्धाओं की वजह से आज हम स्वतंत्र हुए और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इस दिन को मनाते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में यह त्यौहार बड़ी धूमधाम और भव्यता से मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश देते हैं और कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
वन्दे मातरम् वन्दे शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे Thank you, Darshini. May I now request our principal to kindly address the audience. Ma'am, please. Shri Gurubhyo Namaha. First of all, I thank all of you, each and every one of you here. Special thanks to children. Yes, and you here amidst this situation. Thank you so much. This shows the kind of respect you have for our national flag and the Independence Day. Surprisingly, if I have to tell something, with the regular Independence Day, I think today it has been much more better. We have more gathering and children have done exceptionally well with speeches. And dance, of course, the child has taken so much of effort. Thank you so much for coming to the school and doing a lovely dance today. And your speech was especially very good, very nice. Each one spoke very well. Sanskrit speech was good, Hindi was equally good, very nice. Every time the children used to open the paper and read and go, but today I found them really well prepared and delivered beautifully. Song was really nice. I want to learn that song. It has lovely meaning. Once again, thank you so much. And we all pray for a speedy recovery for the whole earth. That's what I will always rightly said. We all need peace now. No fights and no wars. Only peace is required right now. That's all. Keep our mind very positive. It's something very nice to gather here, right? You have never seen your friends. You're always locked inside your house, somewhere fresh here outside, and then back to, it's almost like coming back to school once again. So it's also boring for us, all the time just seeing only the building and not the children. There's no life at all. But today, I feel very happy seeing you all here. So hopefully very soon, this pandemic will get over. We all pray. We'll all come back to school. Of course, this distance and the mask is going to be there with us for some more time. We have to get used to that also. We will get used to that. Today you got used to it very beautifully, very organized. Thanks to Gayatri, Sunita, Ripa, Anu and Sunita. Short notice, Satish, of course, special thanks. Shivakami, because being told you are here and it's very nice. The rest, we are part of the team, so I'm not going to thank Saravanan or both Saravanan. We are all part of the team. Thank you. So we are all, including Kamala. Okay, thank you so much. And go home safe, relax. Keep continuing your online classes and offline classes. We hope the school reopens very soon and we'll be back to normal. Right? Thank you so much. Thank you, ma'am.
I take immense pleasure in delivering a vote of thanks on this special occasion. First and foremost, I extend my most sincere thanks to the Almighty for making today's event a resounding success. Next, I would like to thank our principal for encouraging us and allowing us to be a part of the Independence Day celebrations. I thank our academic coordinator, Mrs. Kamala Murali, for being instrumental in organizing this event. My heartfelt thanks to all the teachers who have been a constant support. I thank all the parents for their presence and cooperation. Last but not the least, I thank all the students for their enthusiastic participation. A happy Independence Day to all. I now request you all to get ready for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय दादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत